guys, welcome to yet another vlog, and this time we are going to Pushkar. So this is another place where we get to see Brahma temple, but हम लोग कोई ब्रह्मा temple नहीं जा रहे. It's just, मैं ये भी नहीं बोल सकती weekend getaway क्योंकि हम Monday को जा रहे हैं. So there's this amazing property that we have booked. 4 of us are here to chill. So yes, I'll make you see how this goes, what property we go, and how are the rooms and everything, and why we have picked this property. So yes. So finally we have reached Ajmer and 2 घंटे लगा हम लोगों को पहुंचने में, and we're taking full precautions like mask and everything. डर के थक गए कि हम मास्क पहने. यहाँ पे देखो किसी ने मास्क नहीं पहना है. From here we'll head to some place to have lunch और उसके बाद हम लोग चेक इन करेंगे. So lunch के लिए हम जा रहे हैं. What's the place? La Pizzeria. One of the famous places here in Ajmer, Pushkar. It's in Ajmer or Pushkar exactly? Pushkar. ये हम अजमेर सिटी के बीच में से निकल रहे हैं और आसपास कहीं तो भी दरगाह भी है. धार्मिक स्थल है पर हम कोई धार्मिक एक्टिविटी करने नहीं आए हैं. We are here just to relax. Left. यहाँ पे? अरे बेटा. ओह सामने देखो बेटा जी. So this is some mid पहाड़ी that we have to cross to go to Pushkar. मतलब अजमेर पुष्कर के बीच का ये एक रूट है जहाँ पे आपको ये पहाड़ियों के बीच में से निकलनी पड़ती है और ये प्लेस काफी सीनिक है. ला पिज़ेरिया किधर है? ला पिज़ेरिया करके जगह है ना खाने का रेस्टोरेंट. ला पिज़ेरिया किधर है? गाड़ी जाएगा. थैंक यू. यहाँ से सीधा चल जाए चौराहे से लेफ्ट. गाड़ी जाएगा ऐसा उन्होंने बोला. घर कितना सुंदर बना हुआ है. घर तो सुंदर है पर गली बड़ी सकड़ी है. एक्चुअली यार अच्छे बने हुए हैं. ये तो रेस्टोरेंट है. चौराया तो यही लग रहा है मुझको. इस गली का यही चौराया. क्या बोला इधर से? लेफ्ट बोला. लेफ्ट तो कुछ है नहीं. सुना ये चौराया नहीं है तिराया है. जो भी है कहाँ पे. So this restaurant is not accessible through cars or something. ये क्या थोड़ी गलियों के बीच में है तो we have to walk down and see. I hope ये इंटरेस्टिंग हो. चल फिर के जा रहे हम लोग यहाँ से. Look at the road condition. Finally, I think हम लोग आ चुके हैं La Pizzeria. It's okay. चलो गाइस. This place is nice inside. काफी स्पेशियस है बट इसका एंट्रेंस थोड़ा गलियों से आके होना था. Are you serious guys? गर्मी में मर नहीं जाएंगे क्या? चलो इधर आ जाए. क्यों अंदर क्या है? अंदर अच्छा नहीं है. अच्छा ये तो शुरू के खत्म हो रहा है क्या? बैठना है बाहर बैठ जाते बाल टाई करके. उसको बाहर का एम्बियंस ज़्यादा अच्छा है. शाम के हिसाब का.
So we are done with our lunch and now we are heading back to our car, and from there we will be checking into our resort, our property. तो अब हम यहाँ से अपना सफ़र वापस शुरू करते हैं. So this property that we are going to वो proper पुष्कर में नहीं है, कुछ farms के बीच में से होकर हमें वहाँ जाना है. So finally we have reached. It is Nature Village Resort and इधर ही हमने प्लान किया था अपना स्टे एंड हम इधर आ गए हैं. Schools operational है ना मतलब? हाँ. So this is our nature villa room where we picked this just because of the pool, कि हम लोगों का एक private pool रहेगा because अभी public pools में access नहीं है. So we thought why not to book a property where we can have our own pool. So this is a room, guys. This is the nature villa room. I mean nature villa. And here we have a dressing area. Here we have a washroom. And from here we have a view to the outside place. This will be a private pool that we're gonna enjoy. This is a little sitting area. This is the evening view, guys, of this property. मंडे को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग होंगे. यहाँ पे फैमिलीज आए हुए हैं. Hi, room number 207. So this is the dining area of this property. Looks good. और यहाँ हम चारों डिनर का वेट कर रहे हैं.
So we're done with the dinner and now we are heading back to our room. थोड़ा chit chat time and after that we'll sleep. Morning में मिलते हैं. Good morning guys. So अभी सुबह उठने के बाद थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद we are going for our breakfast. फाइनली चेकआउट कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी से. से बाय बाय. तो वहाँ पे नारायणा को भी लेंगे. अभी हम नारायणा जाएंगे. So we have left Pushkar and now we are heading to Naraina. वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, मेन गुरुद्वारा. तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं वहाँ पे भी हम लोग दर्शन कर आए. ओहो, ये ट्रक ऐसे कैसे जा रहा है? थोड़ा फनी लग रहा है. Oh, like that. ये रास्ता थोड़ा सुनसान लग रहा है, but then I hope हम सही रास्ते जा रहे हैं. So finally पहुंच गए हम लोग गुरुद्वारा. ध्यान से आना भाई. हम लोग लंगर खाने भी जा रहे हैं. आई होप ज़्यादा लेट नहीं है हम लोग. तो हमारा लंगर हो गया है. नाउ वी आर हेडिंग टू जयपुर. ये लास्ट था, अब डायरेक्ट जयपुर ही जाएंगे. What coffee you bought? Dark Fantasy. Oh my god. With spoon. And this is? Proper. Thank you.
So this trip comes to an end. Meet you soon with another destination. Till then, do like, share, and subscribe to my channel. Bye bye.